Next question, question number 5, exercise 13.6, volume of cylinders. In this video, 4 questions. Question number 5, if it cost rupees 2200 to paint inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 rupees per meter square, find inner curved surface area, radius and capacity. तीन चीजें आपने निकालनी. Total cost of painting is rupees 2200. Rate of painting rupees 20 per meter square. The inner curved surface area of the vessel can be easily written total cost of painting divided by 20 rupees per meter square, that is 110 meter square. This is your one answer. Second, radius of the base. Now if this is inner curved surface area of the vessel, the inner curved surface area of the vessel is 2 pi rh, because if this is a cylindrical vessel and its inner curved surface area will be equal to 2 pi rh, and it is find out, we have find out 110. So from here you have find out r, that is 1.7, because h is 10 meter is given to you. r यहाँ रहेगा, पाई से डिवाइड कर दिया 7/4. वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज पाई r स्क्वायर h. वैल्यूज पुट कर दी गई हैं. Answer is 55 into 7/4, 385/4. That is 96.25 meter cube. So this question number 5, actually this is a basic questions. Only one point have to be remembered कि cost and per meter square दिया हुआ, तो पहले आप inner surface निकालेंगे, फिर radius and then volume. Question number 6. The capacity of the closed cylindrical vessel of height 2 meter is 30.8 liters. How many square meter of metal sheet is required? Now in this case, one unit you have to be remembered that 1 meter cube is equal to 1000 liter. Capacity is given to be 30.8 liter. डिवाइडेड बाय थाउजेंड्स तो मीटर क्यूब में आ जाएगा. कैपेसिटी का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच. 38.8 रेडियस आपने निकालना है. हाइट इज गिवन टू बी 2 मीटर. बाय सिंपलीफिकेशन आंसर इज 7/100. 2 से मैंने कैंसिल किया, 22 को इससे कैंसिल किया तो ये 7 आया. टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन. वैल्यूज पुट करी गई है. 918 मल्टीप्लाई करके आया और ये मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया. फाइनल आंसर्स मैंने आपको ये दिए हुए. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 6. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7. A lead pencil consists of cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled into the interior. The diameter of the pencil is 7 mm. Diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the length volume of the wood lying between the pencil and the graphite. तो ये हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन हो जाता है. इसमें डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, रेडियस हाफ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm है. ये बात यूनिट्स ध्यान में रख लेना. लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r. Volume of the wood is pi r square minus r square into h.
मैं इसकी कैलकुलेशंस में r प्लस r इंटू r माइनस r यूज करता हूं टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला यूज करता हूं। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं यहाँ 7/20 सेंटीमीटर लिखूंगा और यहाँ पे 1/20 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 से डिवाइड करूंगा। अब इसमें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 22/7 इंटू 40 इंटू 7/20 प्लस 1/20 इंटू 7/20 माइनस 1/20, ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8. A patient in a hospital is given soup daily in the cylindrical bowl of diameter 4 centimeter. तो रेडियस 7/2 हो जाएगी. If the volume of the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve the patient 250 patients? The diameter of the bowl 2r7, r is 7/2. Height of the bowl 4 centimeter. Volume of soup in one bowl is pi r square h. That is 154 centimeter cube. Total soup to be prepared for 250 students is this. And you know that 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. 1000 से divide कर दिया. 38.5 liter of soup is required on the daily basis. So this is exercise 13.6 and 2 examples are given in your NCERT books that you have to try your own, and after completing all those examples you will show me. Although the examples are very simple, if you want I can also discuss. Example number 1. The pillar of the temples are cylindrically shaped. Each pillar has circular base of radius 20 centimeter and height 10 centimeter. How much concrete mixture will be required to build 14 such pillars? मीन्स इंटरनल जो डायमीटर है आपके पास, दैट इज टेकन is only radius r is given 20 centimeter, height is 10 meter, comes to be 1000 centimeter, because 1 meter is equal to 100 centimeter. And you have to find out the volumes. तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर में ना कन्वर्ट करके इसी को 100 से डिवाइड करके 1/5 मीटर लिख सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ वन सच पिलर्स पाई r square into height is 10. Volume of 14 such pillars. जो इस टाइप के 14 पिलर्स हैं उनकी वॉल्यूम कितनी होगी? 22/7 into 1/5 into 1/5 into 10 into 14. 88/5 19.6 sorry 17.6 meter cube is the volume, क्योंकि 14 से भी मैंने मल्टीप्लाई कर दी. So this is your example number 1. Example number 2.
At a Ramajan Mela, a stall keeper in one of the food stall has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled with a height of 32 centimeter with orange juice. If the juice is filled in cylindrical glasses of radius 3 centimeter and height 8 centimeter and sold for rupees 3 each, how much money does the stall keeper receive by selling the juice completely? देखिए पहले तो आपको नंबर ऑफ जूस ग्लास निकालने पड़ेंगे. क्लियर? तो पहले तो आप यहां पे नंबर ऑफ ग्लासेस निकालेंगे. नंबर ऑफ ग्लासेस तो आप लिखेंगे V1 अपॉन V2, दैट इज वॉल्यूम ऑफ large cylinder divided by volume of small glasses. Pi r square मतलब r square is radius 15 है तो into 15 into 15 and height is given to be 32 centimeter. Small glass में pi r square radius 3 centimeter और height 8 centimeter. तो 5 into 5 into 4 100 glasses are. तो जो नंबर ऑफ स्टॉल कीपर ने जो मनी रिसीव किया दैट इज रुपीज 300. जो मनी टोटल शॉपकीपर रिसीव करेगा दैट इज रुपीज 300 बिकॉज कॉस्ट ऑफ वन ग्लास इज रुपीज 30. द शॉपकीपर रिसीव्ड 300 रुपीज. Three into 100 is rupees 300. So this is the two examples that I have covered. Now this is your complete exercise of 13.6 including the examples also.